Okay, so let's start. Starting with today's current affairs. So there was this question that we asked in the last class, and the correct option is 1 and 2, both. Please read the question once. And most of the students marked it correct. Okay, moving to the next question. Okay, so Sheikh Hasina verdict updates. Bangladesh asks Indian government to hand over Hasina, former minister. Come on, any idea what it is about? What? Yes. So what is ICT? What is ICTBD? So it's International Crimes Tribunal. So it was like came and it is related to Bangladesh freedom reform, right? Since then it was made. So है क्या ये? Any idea? दूसरे कंट्री में अगर उनका कोई क्राइम करने वाला होता है गया हो. So 1971 में Bangladesh liberation war happened, right? And it is related to also this later mass violence which happened in the country. ठीक है? तो बांग्लादेश में it's like a special court made. तो यहाँ पे decisions लिए जाते हैं, ठीक है? कैसे कैसे cases में जैसे mass killings, torture, right? Violent crackdowns on the basis of this, right? So function कैसे करती है? This is like a special court, right? And it can give strong punishments. कैसे strong punishment? Life imprisonment से लेकर death penalty तक, ठीक है? So trials can even happen in absentia, means when the accused is not physically present there, तभी भी उसे punishment सुनाई जा सकती है. UN raised lots and lots of questions about this. बहुत बार उसे problem हुई है and it मतलब time to time basically इस चीज पर टिप्पणी करी है UN, right? And in this case also recently also UN had problem with this. So let's understand the background story. So imagine a country Bangladesh, ठीक है? So students started protesting in 2024. It was a very peaceful protest, right? So they thought that government is not doing enough for employment, right? Enough for them. So they started protesting against government. But slowly this protest grew into more bigger and bigger, right? They become a movement against the ruling government by Sheikh Hasina,
है ना। तो जो प्राइम मिनिस्टर 15 साल से रही है उसके अगेंस्ट में इट लाइक लेड इनटू वेरी वायलेंट protest. So protest was peaceful at first, but government responded with very strong, forces and helicopters, drones. जितना violence तुम सोच सकते हो, it was present there, right? So many people were injured and killed during this protest. है ना? We all saw the news. तो इससे क्या हुआ? Government fell, right? Fall of the government was seen. So the protesters become so big that the government had to step down, है ना? So this new temporary government, this ICT, this took charge, ठीक है? So they set a special court, the International Crime Tribunal, Bangladesh, to investigate that if something wrong was done by this present government, and if yes, then punishment should be given to them. ठीक है? ये सारी basis पे this special court was given. अब दिस ट्रिब्यूनल अक्यूज शेख हसीना और उसके कुछ टॉप मिनिस्टर्स को और वन व्हाट कि तुमने वायलेंस किया था अगेंस्ट स्टूडेंट्स एंड यू आल्सो यूज डेडली वेपन्स, ठीक है, एंड नॉट स्टॉपिंग सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम कमिटिंग अब्यूजेस एंड फॉर कॉजिंग दिस सिविलियन डेथ्स. इस बेसिस पर, ठीक है, उन्हें डेथ पेनल्टी सुनाई गई है. तो शेख हसीना हैड लाइक ऑलरेडी लेफ्ट बांग्लादेश एंड वाज लिविंग आउटसाइड द बांग्लादेश, है ना. So the court tried it like all this verdict in her absence. So this is called trial in absence, ठीक है. अब वर्डिक्ट 17 नवंबर 2025 को सुनाया गया. इस दिन पर फाइनल डिसीजन दे दिया गया. तो शेख हसीना was like found guilty crime against humanity and she was given the death penalty and her former home minister was also sentenced the same. तो दिस इज अ बिग इंटरनेशनल न्यूज क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को डेथ सेंटेंस सुना जाए, राइट. दिस इज व्हाई इट इज इन द न्यूज एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल आल्सो, ठीक है. अब वर्डिक्ट के पे हुआ क्या? तो बांग्लादेश बिकेम वेरी टेंस एंड प्रोटेस्ट एंड वायलेंस ब्रोक आउट अगेन. तो पुलिस एंड आर्मी वर डिप्लॉयड एवरीवेयर. सो दिस गवर्नमेंट आस्क्ड द कंट्री वेयर हसीना आर स्टेइंग टू सेंड हर बैक, ठीक है. कहां पर रह रही है हसीना? इंडिया में, ठीक है. सो यूनाइटेड नेशन सेड कि it support justice, but जो तुमने ये absent में this absentia trial absentia is used, this is wrong, ठीक है. It raised his like voice against it, right. So this is the concern about the death penalty. The UN also has a general view that using the death penalty is a bit extreme, ठीक है, and it can be problematic for human rights. तो ये सारी चीजें UN ने raise करी है. Now Sheikh Hasina, the former Prime Minister of Bangladesh, has reportedly taken refuge in India, right? This is why it becomes concern for India also, ठीक है. तो Bangladesh wants to hand her over, ठीक है, and so that she can face the verdict. किस कंडीशन पर भेजेंगे हसीना जी को यहाँ से? Any idea? Okay. तो इंडिया का रोल क्या होगा इसमें? आईसीटी में क्या लिखा है कि अगर उन्होंने जो भी ऑर्डर दिया है तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफर मर्जी है इंडियन गवर्नमेंट. ओके. सो पहला है डिप्लोमेटिक बैलेंस. क्या होता है डिप्लोमेटिक बैलेंस? एग्जैक्टली. फर्स्ट वन इज डिप्लोमेटिक राइट. तो पहले तो इंडिया शेयर्स अ लॉन्ग बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है, तो इसलिए उनके जो रिलेशंस है वो अच्छे मेंटेन करके चलने पड़ेंगे, राइट. तो दिस एक्सट्रैडिंग हर कुड अफेक्ट दिस बायलैटरल टाइज जो हमारा इतना टाइम से बांग्लादेश के साथ में चल रहा है, राइट. देन अनदर थिंग इज लीगल कंसिडरेशंस. व्हाट आर लीगल कंसिडरेशन है? एनी आइडिया? तो इंडिया कैन नॉट हैंड ओवर समवन विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसेस, ठीक है. अगर ये एक्स्ट्राडिशंस रिक्वायर एविडेंसेस या फिर ट्रायल्स या फिर कोर्ट अप्रूवल्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही कोर्ट इंडिया हैंड ओवर करेगा हसीना को, राइट. सो इंडिया मस्ट इंश्योर दैट इट फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द प्रोसेस, है ना. देन उसके बाद दिस कॉशियस अप्रोच इज आल्सो देयर. इंडिया हैज सेड इट कि इट विल एंगेज एंड कंस्ट्रक्टिवली विद बांग्लादेश, maintaining like its meaning it wants to cooperate diplomatically, but it cannot hastily like action that could create tension or violate human rights also, ठीक है. Like they want to maintain this relationship with Bangladesh, but they want to maintain this human rights also, ठीक है. तो दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा इंडिया को. Now there is this extradition treaty, very important.
Any idea about it? It plays a major role that if Hasina will go there or not. So this is like a formal promise between two countries. ठीक है? If a person commits a crime in one country, तो क्या होगा कि it escape to the others. The country where they are hiding agrees to hand them over to face trial. ठीक है? तो जैसे अभी यहाँ पे हसीन आई है, तो ड्यू टू दिस ट्रायल, ड्यू टू दिस ट्रीटी, राइट, दे हैव टू लाइक गिव इट बैक. But India and Bangladesh like both have signed this extradition treaty. So this means Bangladesh can formally request India to surrender someone accused of a crime in Bangladesh. ठीक है, तो उन्हें भेजना पड़ेगा, ये तो तय है. ठीक है, but they have to make sure that these legal processes are fine and up to the mark. ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा कि बांग्लादेश जो है फॉर्मल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजेगा इंडिया को, राइट, एंड उसके बाद एग्जामिन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा केयरफुली कि, और फिर उसके बाद इंडिया चेक करेगा कि ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स से मैच होते हैं नहीं, and all the legal procedures are there or not, right? So all these things. Only then, after India courts approve that request, can that person can be handed over. Okay? Only then can Sheikh Hasina can go over there. So limitations क्या क्या है? Can like India refuse this extradition? If legal terms are not met, yes. If the accused face death penalty, या फिर political persecution, or if law isn't followed properly, then it can deny. Then India can deny कि हम नहीं भेज रहे हैं, right? So जैसे शेख हसीना का केस है, ये इन्हीं की वजह से थोड़ा ज्यादा ट्रिकी हो चुका है, स्पेशली फॉर इंडिया. सो बिकॉज द ट्रायल वाज इन एब्सेंटिया, ठीक है, अब क्योंकि उनकी एब्सेंस में ही हुआ है ये, तो इट्स समवेयर लाइक अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, राइट, एंड इट रिजल्टेड इन डेथ सेंटेंस. अगर कहीं ना कहीं लाइफ इम्प्रिजमेंट होती, ठीक है, तो स्टिल वी कुड हैव कंसीडर्ड, लेकिन सीधा ही डेथ सेंटेंस है, तो इट्स रेजिंग क्वेश्चंस, राइट. सो इंडिया हैज टू बी केयरफुल बिफोर अग्रीइंग टू एनीथिंग. अंडरस्टूड टिल हियर? ठीक है. तो देखा जाए तो ये ट्रीटी एक बेसिकली रूल बुक की तरह है, राइट, व्हिच हेल्प्स अस टू कैच द क्रिमिनल्स. ठीक है, और बट इंडिया कैन नॉट इग्नोर ह्यूमन राइट्स और लीगल प्रोसीजर्स. वो दोनों ही चीजें देखकर और बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी उनको. अंडरस्टूड? Okay. So there is a thinker, Cesare Beccaria, and he said uh, that we should not have these harsh punishments. So basically, he is against the death penalties. Okay. So he write in his Crimes and Punishment, which came in 1764, what he says that punishment should never be more than what it is necessary. राइट, तो एंड इट इज वेरी अमेजिंग बुक एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल टू रीड इट. तो क्या बोलता है कि बेसिकली जो पर्पस होना चाहिए पनिशमेंट का, वो फ्यूचर क्राइम्स को रोकने के लिए होना चाहिए, ठीक है, ना कि किसी को हार्म करने के लिए या ह्यूमिलिएट करने के लिए. सो इज नॉट जस्टिफाइंग क्राइम्स, इज जस्ट सेइंग कि अगर तुम्हें सुधार लेकर ही आना सोसाइटी में, तो इस तरीके से लेकर आओ जो लॉन्ग टर्म तक चल सके. लाइक सो गिविंग डेथ पेनल्टी विल नॉट हेल्प सोसाइटी इन एनी वे, राइट. सो दिस इज व्हाट ही सेज. सो ही सेज दैट डेथ पेनल्टी इज अननेसेसरी, you should not have it. So it strongly opposed capital punishment also. So according to him, state does not have the moral right to take a life. ठीक है, and killing the offender does not make society fair. तुम कुछ भी कर लोगे, there will be like another criminal ready to do the crimes, right? So long term imprisonment is more effective and humane than giving the death penalty, and it actually fits this case, right? So what is your views about it? What do you think? About acha, you like agree with him? Okay. So according to him, this death penalty does not deter crime. ठीक है, he said that criminals do not think about punishments when committing crimes. और that's very true. जब वो कोई crime करता है, तो he is thinking about that pleasure, like serial killers, they think about that particular pleasure happening to them at that particular moment, right? But उसके बाद punishment के बारे में वो नहीं सोचते हैं. उनके सिर्फ डर रहता है कि हम पकड़े ना जाए. अगर पकड़े जाते हैं, then it ends to them, right? वहीं पे full stop लग जाती है उनके. बाद में तुम कुछ भी punishment देते हो, it won't affect them. ठीक है, so this is what he says, death penalty does not scare them or reduce crimes. So he argued that this certainty of punishment, right, it should be more than severity of punishment. Understood? Okay. Now this news matters for UPSC students. Why? Why? Because it comes in GS paper 2, ठीक है, international relations में बहुत important, then GS paper 2 polity and governance, and 3
इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, एंड ऑल्सो इन एथिक्स पेपर, ठीक है, क्योंकि ये टेल्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स, अबाउट मिसयूज ऑफ पावर और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, ठीक है, और मोरल अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमें बताता है। देन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन ऐसे पेपर, ठीक है, ये हमें पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, एंड इट टेल्स अस अबाउट ह्यूमन राइट्स and justice, democracy and dissent, right, and when the state turns against its people, right, so these things this news tells us about, so this is why it is important. Okay, next news we have, so the lower judiciary litigation pendency stagnation, any idea what it is about? Okay, इमेजिन करो कि एक न्यायपुर नाम का एक छोटा सा टाउन है, राइट, एंड देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सो न्यायपुर पीपल ब्रिंग देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, और वहां पे जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं, दीज पेटी क्राइम्स, दीज स्मॉल बिजनेस फाइट्स अबाउट लाइक विद ईच अदर, राइट, सो दे लाइक गो टू जज इन द लोअर कोर्ट, लोअर जुडिशरी या फिर सबऑर्डिनेट्स में, एंड दे शेयर देयर प्रॉब्लम, राइट. सो बट प्रॉब्लम क्या है? सो प्रॉब्लम इज दैट ओवर द इयर्स मोर एंड मोर केसेस आर फाइलिंग अप, ठीक है, और न्यायपुर कोर्ट जो है वो जस्टिस नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस. सो पीपल फाइल केसेस बट हियरिंग्स डोंट फिनिश क्विकली, ठीक है, तो लोअर बेसिकली दिस लॉयर्स दे आस्क फॉर डिलेज, है ना, एविडेंसेस टेक्स टाइम्स टू कम, और दीज जजेस हैव लाइक मोर केसेस देन दे कैन हैंडल, ठीक है, तो ये ही प्रॉब्लम अभी हो रही है. तो imagine that these judges themselves, right, some of them have been like serving for many years, ठीक है, अब कोई भी काम कर रहा है सरकारी में तो like they want promotion also, so they are feeling like stuck, they think that we are not growing in this field, ठीक है, because of this, and this is like a sense of stagnation that they are having, ठीक है. So this high level group of judges, right, this a constitution bench of the Supreme Court recently pointed out to this problem, which is the huge backlog, ठीक है, of cases in not just hurting of people's sentiments but also it's like psychologically mentally exhausting for those judges as well, okay. So this is a concern for these judges, right, and it is somewhere, you know, injustice for the justice, right, so it's like also hurting people, civilians, and also to the judges. So because cases don't close fast, है ना, judges spend more and more time on like all cases, so fewer new judges are attracted to join the job or stay in it, right, so because they feel they won't grow in their careers, ठीक है. तो दिस जस्टिस जैम इज स्पेशली ग्रेव इन द लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, क्योंकि वहीं पे ज्यादा पाइल अप हो रहा है केसेस का, राइट, पुराने सोल्व नहीं हो रहे हैं और नए आते जा रहे हैं, राइट, बिकॉज दैट्स वेयर द मोस्ट केसेस स्टार्ट, राइट. अब प्रॉब्लम क्या है कि पहला तो ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस आते हैं, राइट, तो इस न्यूज में क्या बताया कि देयर आर 4.5 करोड़ ऑफ पेंडिंग केसेस. हाउ मेनी? 4.5 crores, ठीक है, there are 4.5 crores of pending cases which are waiting to be solved, right, so this number keeps growing every year, क्योंकि जो नए केसेस है वो आ रहे हैं और पुराने सॉल्व नहीं हो रहे हैं. then there is like long waiting cases, ठीक है, many cases have been like waiting for 5 years, और कुछ तो लोअर कोर्ट में इतने साल पुराने, लाइक 10-10 साल पुराने, ठीक है, एक तो नंबर इतना ज्यादा है कि बहुत सारे केसेस है, दूसरा पुराने इतने ज्यादा है, राइट, एंड अदर थर्ड इशू दैट वी आर फेसिंग इज दैट दे आर नॉट इनफ जजेस, ठीक है, सो मेनी जजेस पोजीशंस आर वैकेंट, खाली पड़ी हुई है, ठीक है, सो दे आर द वंस हु आर वर्किंग हैव टू मेनी केसेस टू हैंडल, ठीक है, तो इंडिया हैज लाइक ओनली 15 जजेस फॉर एवरी 10 लाख व्हिच इज फार लेस देन व्हाट्स नीडेड. सोचो 15 जज है, 10 लाख तुम्हारे केसेस है, डू यू थिंक इट इज लाइक पॉसिबल टू सॉल्व इट? ये तो वही बात होगी कि एक टीचर है, 100 बच्चे हैं, एंड लाइक शी हैव टू डू मैनुअल वर्क आल्सो, ठीक है, चेक द पेपर्स आल्सो एंड हैव टू हैंडल द क्लासेस आल्सो. So is it possible? Doesn't matter how much dedicated the teacher is, doesn't matter how much she is working, hardly working, right, she cannot work, she cannot attend those 100 students, right, so the same thing is happening with judges also. तो सारे कोर्ट्स, राइट, लोअर कोर्ट्स, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे मिलाकर हमारे पास 5 करोड़ पेंडिंग केसेस अभी तक हैं. 5 करोड़, दैट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट. लोअर कोर्ट्स में हमारे पास कुछ 4.6 करोड़ है, राइट, हायर कोर्ट्स में 63 लाख है, और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में है 83,000, राइट. तो हो क्या रहा है कि लोअर कोर्ट्स जैसे जैसे मानो कि इतने सारे बच्चों में एक टीचर को खड़ा कर दिया कि आपको हैंडल करना है, ठीक है, डिजिटली चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, मैनुअली शी हैव टू हैंडल एवरीथिंग, राइट, देन शी हैव टू हैंडल द टेंट्रम्स ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो, देन शी हैव टू लाइक गिव असाइनमेंट्स आल्सो, और वो सारी चीजें मैनेज करनी है. तो डू यू थिंक लाइक इट इज फेयर टू दोस टीचर्स? डू यू थिंक शी विल ग्रो इन हर करियर?
Don't you think that is exhausting for her mentally also, right? So this is the situation that is happening to our judges. Okay. तो प्रॉब्लम यही है कि ना तो इनफ जजेस है हमारे पास, ठीक है, और बहुत सारे केसेस हैं, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा इतना ज्यादा स्लो है, ठीक है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू हायर न्यू जजेस, ठीक है। तो पहले क्या होता है, एग्जाम्स होता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर प्रमोशंस होते हैं, तो बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। देन बाय द टाइम वन जजेस ज्वाइन, द टू रिटायर्स, ठीक है, तो ये सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। जब तक कोई एक जज आता है, दो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। देन जजेस इन लोअर कोर्ट्स ऑफन वेट 10 to 15 years फॉर प्रमोशन। इतना लंबा टाइम, 10 से 15 साल, दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट। फिर उसके बाद दिस मेक्स देम फील डिमोटिवेटेड। एक तो काम इतना ज्यादा है, केसेस इतने सारे पेंडेड है, ठीक है, ना ही करियर में उन्हें ग्रोथ दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं बैकलैश करता है, राइट। सो दिस डिमोटिवेटेड सिस्टम वर्क इवन मोर स्लोअर, राइट। सो दिस पुअर कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बहुत सारे कोर्ट्स के पास ना तो इनफ कोर्ट रूम्स है, ठीक है, ना ही प्रॉपर स्टाफ है, एंड देन देयर आर लाइक ऑल कंप्यूटर्स या फिर नो कंप्यूटर्स। डिजिटलाइजेशन का मतलब ही नहीं है, एवरीथिंग लाइक इवन इन 2025 वी आर यूजिंग एवरीथिंग मैनुअली, वी आर डूइंग थिंग्स मैनुअली, राइट। सो देयर आर लाइक वीक इंटरनेट ऑल्सो। सो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मेंशन की गई है इस आर्टिकल में, राइट। सो देन टू मेनी एडजर्नमेंट्स, क्या है, तारीख पे तारीख दे रहे थे, नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट, राइट। सो दीज लॉयर्स आस्क फॉर न्यू डेट्स, उसकी वजह से वो पाइल अप होते जाते हैं केसेस, एंड देन यू नो कि डेट्स देने में कितना टाइम लगता है, राइट। सो जजेस समटाइम्स गिव टू मेनी डेट्स, राइट, एंड दिस मेक्स सिंपल केस ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स। जो एक केस 15 मिनट में 20 मिनट में सॉल्व हो सकता है, वो नेक्स्ट डेट की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, वो खिंचता चला जाता है, राइट। देन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, these procedures are old and slow and paperwork is very heavy, ठीक है, it is like moving one desk to another, right। So digital process बहुत ज्यादा नहीं है, right। So these things are mentioned in this article. Then another thing, here government is the like biggest victim. क्यों? Why do you think so? Because 60 to 70% cases in courts involves the government. 60 to 70% of the cases, ठीक है। So the government departments, they keep appealing every cases, even छोटे छोटे issues के लिए भी, ठीक है। So these appeals like fill up these courts quickly, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का भी रोल यहाँ पे प्ले होता है। Then lack of alternative ways, कि स्मॉल डिस्प्यूट जो इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए सॉल्व हो सकता है, खुद से सॉल्व हो सकता है, वी आर रनिंग टुवर्ड्स द कोर्ट्स, ठीक है। हर एक छोटे इश्यू को हम लोग कोर्ट में ले आते हैं, और इसकी वजह से, इसमें से अगर हम आधे केसेस भी निकालेंगे तो वो 15 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे, बट स्टिल दीज केसेस आर देयर, राइट। कुछ चीजें जो सॉल्व हो सकती हैं, राइट, कोर्ट से बाहर सॉल्व हो सकती है, हम स्टिल वी आर लाइक ब्रिंगिंग इट टू द कोर्ट्स, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है हमारे लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज सोसाइटी इज इंक्रीजिंग लिटिगेशन, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है, अब अवेयरनेस और डिस्प्यूट्स, तो इसलिए हर साल एक नया केस आता है इनकी वजह से, राइट। नाउ प्रॉब्लम इज दैट जस्टिस इज डिलेड, राइट, सो व्हिच मींस पीपल डोंट गेट टाइमली सॉल्यूशंस। अब टाइमली सॉल्यूशन नहीं होगा तो देयर विल बी लाइक गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड आल्सो पीपल, सिटीजंस, राइट। सो जजेस फील overworked and this demotivated, which makes the problem worse. So few people want to join the judiciary because they see a stuck career path, right? So because of this backlog and stagnation, what happens, the lower judiciary is overburdened, है ना। तो judges feel demotivated because of this and the promotions are very slow. Understood till this है? Okay. इस चीज को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? Increase number of, okay, what else, मतलब जो वैकेंट सीट खाली हुई हुई है उनको भरा जाए, what else, good, what else, ओके, पहला है कि जुडिशियल वैकेंसीज को फिल करा जाए, राइट। तो जो पोजीशंस लोअर कोर्ट्स पर खाली है, एम्प्टी है, राइट, वहां पे रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी की जाए। देन मॉडर्नाइज कोर्ट सिस्टम, एज आई सेड बिफोर कि डिजिटलाइजेशन का नाम है तो वो भी ऐसे है लाइक वी आर समवेयर स्टक इन 90s, राइट। सो इट्स बेटर दैट वी यूज, it's better that we use these digital tools, right, this case management system. So यहाँ पे जो जजेस है वो क्लर्क का काम ज्यादा कर रहे हैं, मैनुअली काम ज्यादा कर रहे हैं, rather than taking solving decisions these cases, वो क्लर्क वाला काम ज्यादा चल रहा है कोर्ट्स में।
So it's better that we modernize court system, है ना? Then reform career progression. Make sure that judicial officers have like clearer and faster pathways, है ना? For promotion, so their work and also they can stay motivated. ठीक है? Then encourage alternative dispute resolutions. ADR should also be given. कि meditations वगैरह, right? These things which keeps them like mentally healthy, right? वो सारी चीजें भी consider करनी चाहिए. Okay. अब बात करते हैं. Questions. So this one is homework. What is the correct answer? Hmm? Okay, read it. फर्स्ट का 2 दोबारा पढ़ो. So statement 1 is that High Court has jurisdiction to review its own judgment as the Supreme Court does. So under Article 2026, right, this inherent powers, High Courts can review their own judgment. ठीक है, जैसे कि SC under basically Article 137. So answer is 1. Okay. ठीक है. 3. 3 second. Option C is me. ठीक है, ये वाला आंसर है. चलो. So this one is homework. Next news, India needs to connect, build or revive with Africa. Why do we need to build relationship with Africa? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें? Minerals, okay. What else? As a result of? ठीक है. तो इंडियाज एंगेजमेंट विद अफ्रीका इज लाइक गोइंग ऑन. ठीक है, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट करा है अफ्रीका पर, राइट? डेवलपमेंट पार्टनरशिप, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग्स और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट. एंड देन देयर इज दिस रिलेशनशिप पीपल टू पीपल आल्सो. ठीक है, कल्चरल रिलेशनशिप with us. Then in 2015 India Africa Forum Summit happened, right? IEFS. और हमने इनकी 54 अफ्रीकन कंट्रीज को इनवाइट किया था. 54 अफ्रीकन कंट्रीज. So like we invested a lot on them, right? So हमने क्या क्या इन्वेस्ट करा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट? डिजिटल कनेक्टिविटी पे, एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पर, राइट? एंड ऑल्सो देयर बी लाइक ग्रांटेड एंड प्रोजेक्ट वर ऑल्सो गिवन टू देम. So there is like G20 का जब membership हुआ था, now it's member, Africa is member, so we played a major role in this, right? So हमने basically push किया था इन्हें and to be a member. Then people to people relations, people to people relation is like we have this cultural bond with them, right? Historical ties we have, right? And this is like a student exchange system is also like we just recently had IIT Madras there, right? तो हम ये सारी चीजें वहाँ पे खोल रहे हैं, तो और वहाँ पे हम लोग basically अपना जितना relation बढ़ा सकते हैं, we are doing that. So then this 40,000 Africans, they are trained in India, right? This education and skill development could be seen. So we are investing a lot on Africa. Now why this matters? Ki Africa is like young continent, है ना? And India is investing in Africa's pool a lot. So this creates goodwill and skilled manpower somewhere, right? We can use that resource. If like I have to say it very precise and clearly, we can use that resource a lot because we have invested a lot there, है ना?
तो IIT मद्रास हमने वहाँ पे खोला है. This is like a historic first. It marks India's transition into like global education provider, right? It is somewhere telling us that we are also growing in education. अब why India should pay more attention to Africa? उसका reason same history and culture. Exactly, Ashutosh. Okay, then Africa is rising. Lot of young people, economic growth or potential market could be seen. Okay, then it's rich in minerals, right? Lithium or cobalt, right? It's very rich and we need that. So India needs for its clean energy goals, just like electric vehicles or green tech. We are like doing a lot of those initiatives, right? So Africa is also important for India's energy and security. For example, oil के लिए या फिर natural resources के लिए भी हमें अफ्रीका की जरूरत है. ठीक है. नाउ हाउ इंडिया कैन हेल्प अफ्रीका, जो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो. हम थोड़ा और इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अफ्रीका, एग्जैक्टली. सो एंड इंडिया हैज स्किल्स, राइट, कैपेसिटी बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, राइट, एंड दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. So this we can do. Then this digital cooperation is a big part, right? And then also security operations we could do. India can work with African countries to keep sea routes safe, है ना? And then this geopolitics and global influence also could be seen. So Africa is not just economically important; it is politically is very important also. It plays a like as important role as in other roles, right? So जैसे कि UN G20 में, right? So by building strong ties in Africa, India strengthens this global south, है ना? And this balances the leadership also, like other powers also, like China. So there are like these active in Africa, है ना? So India's model is different. It claims to avoid this extractive problems, right? So these strategies, so instead India focuses on this long term development partnership. इसीलिए हम लोग इतना ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. अंडरस्टूड? क्या क्या चैलेंजेस है? हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं इतना, बट देयर माइट बी सम चैलेंजेस. व्हाट चैलेंजेस वी कुड फेस? हम्म. चाइना कुड, चाइना कुड इंटर, ओके. हाँ, मतलब फ्यूचर में वी कैन थिंक लाइक दैट. I hope the slide is visible now. Corruption, okay. Corruption could be the reason also, okay. Okay, so even though India is investing, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि on the projects that we are investing, this might be the case कि वो projects delay हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब तो हम तो अपना future plan लेकर चल रहे हैं, but those projects could be delayed, right? Then there is this strategic competition also. China is already very strong in Africa, है ना? तो इंडिया मस्ट केयरफुली डिजाइन इट्स एंगेजमेंट, किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है, फ्यूचर में हमें कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट ऑल्सो वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज, राइट? Then there is a question of sustainability also. India's help must ensure कि Africa's countries develop their own capabilities. Rather than dependency, they should make sure कि हम पे ही पूरा depend ना हो जाए, right? Then this long-term vision is also required. So idea is not just to invest in Africa, but to co-create. Help Africa build, but also build a relationship where both the sides grow. अब ये नहीं है ना कि अफ्रीका ग्रो कर गया and then like we are stuck somewhere, ठीक है? तो रिटर्न में हमें भी कुछ मिलना चाहिए. So considering this, we have to plan accordingly. So this is the South-South cooperation, ठीक है? Working with other developing regions rather than purely, this donor recipient mindset. Understood? Okay. Okay, there is this questions. बताओ. हम्म. हाँ, good. All three. Okay, next question.
Is it visible to you? What is Look Africa policy? Exactly. So like you have to enhance economically and political partnership with African countries. जिसमें trade भी आएगी, capacity भी आएगी, technology भी आएगी, right? You have to consider all of this. ठीक है. Okay. Then this part is your question. ठीक है. Next, this one. Leave this one. This. Very easy answer. And so both 1 and 2 are the correct answer. How? क्योंकि LOCs are the key tools for India-African Development Partnership. दिख रहा है ना? And this project exports also and expansions of India's influence on global South. ठीक है? So these are the main questions that came ठीक है, related to this. So you can read it. Take a minute and read it, please. Now talking about why it is important. So J for JS paper 2 international relations and governance में आता है. Then JS paper 3 in economic and security. And essay paper में it is very important. And in public policy and international studies also. ठीक है? Okay. Now moving to the next news. So perennial GRAP is not the solution for Delhi's air pollution. Supreme Court. So Supreme Court said this. What it means? So GRAP is Graded Response Action Plan, right? So what it does, it measures that like if any measures are required or not, right? If anything, if looking at the pollution, looking at the environment, what measures we have to take, right? So think of GRAP like a warning system, okay? Like Delhi ka jo air pollution hai, it's like giving a warning to them, right? There are 4 phases of it, okay? पहला इतना severe नहीं है, but fourth one is very severe, ठीक है? So we move from 1 to 4. ठीक है सो जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है ग्रीन येलो रेड एंड डार्क रेड राइट सो इन द सेम वे इट इज देयर आर लाइक 4 phases of it 1 2 3 and 4 राइट सो द worse of the air gets when it the stricter the rules become ठीक है फर्स्ट में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है थर्ड और फोर्थ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है राइट सो इट इज अ स्टेट ऑफ लाइक इमरजेंसी एक्शंस द गवर्नमेंट मस्ट टेक like when pollution crosses its certain levels and it works in stages like 1 2 and 3 and 4 right and depending on how the bad air is right and its air quality index. So according to these measures, we take the decisions and we follow up with the levels. ठीक है अब पहली स्टेज की बात करते हैं तो इट्स पुअर ठीक है AQI कितना होता है 201 से 300 तक ठीक है तो यहाँ पे माइल्ड एक्शंस देखे जाते हैं ठीक है जैसे कि डीजल जनरेटर्स विल स्टॉप यूजिंग या फिर विल इंक्रीज स्वीपिंग ऑफ रोड्स ठीक है और थोड़ी डस्टी एक्टिविटीज विल स्टॉप डूइंग ठीक है देन स्टेज 2 इज लाइक वेरी पुअर इट्स लाइक AQI इज 301 to 400 ठीक है तो यहाँ पे थोड़े स्ट्रॉन्गर स्टेप 1 से ज्यादा थोड़े स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्स लिए जाते हैं जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हम लोग बंद कर देंगे राइट एंड विल इंक्रीज सम पार्किंग चार्जेस टू यू नो discourage the vehicles and then also will ban few polluting vehicles ठीक है जो ज्यादा pollution फैलाती है then stage 3 is severe it is like AQI is 401 to 450 ठीक है very severe तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वगैरह सब कुछ रोक दिया जाएगा और ट्रक्स की एंट्री दिल्ली में बंद कर दी जाएगी और जितने भी स्टोन क्रशर्स हैं उन सबको रोक दिया जाएगा जो भी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं विल स्टॉप दैट राइट देन स्टेज 4 इट इज वेरी सीवियर लाइक मोर देन सीवियर सो इट्स लाइक इमरजेंसी 450 प्लस ठीक है तो दिस इज लाइक द अलर्ट ठीक है यहाँ पे क्या होगा कि सारे ही एंट्री ट्रक्स की बंद कर दी जाएगी एंड देन डीजल व्हीकल्स रोक दिए जाएंगे राइट एंड देन शट डाउन ऑफ स्कूल्स because of the pollution and stop all the construction or heavy industrial activities will stop that okay so these 4 stages we have now what Supreme Court said and why is it in the news so Supreme Court said that you can't keep Delhi in perpetual emergency mode all year
मतलब तुम ये कब तक मेजर्स लोगे? वी हैव टू टेक सम एक्शंस व्हिच इज लाइक इम्प्लीमेंटेड इन लॉन्ग टर्म आल्सो. So this is what Supreme Court wants to say. तो it says that instead of reacting, जितनी बार पोल्यूशन चाहता है हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एंड वी टेक दीज 4 स्टेप्स, है ना, पोल्यूशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू AQI रिपोर्ट्स. सो द कोर्ट वांट्स दिस लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल प्लान्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करके चलो. सो इट आस्क्स द सेंट्रल गवर्नमेंट कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को कि तुम कोऑर्डिनेट करो स्टेट्स के साथ. कौन सी स्टेट? जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान. क्यों इन वाली स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने? व्हाई दीज स्टेट्स ओनली? निशान बनाना मत करो. बताओ. एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, स्पेशली जब बर्निंग आता है तो दे आर द मेन सोर्सेस. तो दिस इज व्हाई दे लाइक सुप्रीम कोर्ट टोल्ड कि इनके साथ कोऑपरेट करो और अपना इश्यू तुम मैनेज करो, ठीक है. सो द कोर्ट क्लियरली सेड कि लाइक दिस शुड बी लाइक डेल्ट विद लाइक प्रॉपर मेजर्स, क्योंकि ये स्टेप्स लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है. सो सम पीपल सजेस्टेड कि क्यों ना हम ये परमानेंट ग्रैप ले लिया जाए, ठीक है, जैसे कि स्टेज 3 और स्टेज 4 सीवियर और सीवियर प्लस, राइट. तो हम ये परमानेंटली क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर देते, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया. क्यों मना करा है? क्योंकि अगर 1 ईयर का लॉकडाउन लग गया, तुम बैन कर रहे हो ट्रक्स आने के लिए, ठीक है, तो इट इज लाइक हर्टिंग लाइवलीहुड ऑफ पीपल, है ना, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए वो चीज मना कर दी गई है. सो द कोर्ट आर्ग्यूज दैट दे शुड बी लाइक बैलेंस्ड, सम यू नो थोड़ा एग्जाम्पल जो भी होगा बैलेंस देखा जाएगा, राइट. सो वी कैन टारगेट दिस पॉल्यूशन एक्टिविटीज व्हेन दे आर रियली नेसेसरी, ठीक है, स्टेज 3 और स्टेज 4 तब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब सच में बहुत ज्यादा जरूरत होगी. अनटिल एंड अनलेस हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट. देन डीपीसीसी क्या है? व्हाट इज डीपीसीसी? Delhi Pollution Control Committee, right? So it noticed that one key agency, which is DPCC, right? Over half of its posts are vacant. ठीक है. So this weakens pollution control for enforcement. आदमी नहीं है काम करने के लिए, तो फिर नजर कौन रखेगा उस चीज पे, right? So this shows that one reason, right? Long-term pollution control is not working well, right? And this shows the institutional weakness, है ना? So the manpower is not enough, और उसके बाद मे बी नॉट इनफ विल और कैपेसिटी टू इन्फोर्स दिस पोल्यूशन रूल्स. अगर मैन पावर ही नहीं है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कौन करेगा? और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हो भी गए तो हु विल कीप एन आई ऑन देम, ठीक है. सो दिस इज अ कंसर्निंग इशू व्हिच इज अराइजिंग, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देयर इज राइट टू क्लीन एयर, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, है ना, वही नहीं मिल रहा है हमें. तो कोर्ट इज ट्रीटिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट एज अ बेसिक. सो कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न ये होना चाहिए कि ये सिर्फ एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है टू बी हेल्थी, राइट. सो दिस इज लाइक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. सो पोल्यूशन इन दिल्ली इज नॉट जस्ट दिल्लीज प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज से आ रहे हैं, नेबरिंग स्टेट से आ रहे हैं, राइट. एंड वी शुड कीप एन आई ऑन देम एंड दे शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, ठीक है. क्योंकि अगेन लाइक वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास, जहां पे भी डिवीजन आएगा, स्टेट में आए, रिलीजन में आए, कम्युनिटी में आए, कास्ट में आए या फिर नेबर्स में आए, राइट, जितने भी जहां पे भी डिवीजन का पार्ट आएगा, विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ एंड सेम इज हैपनिंग विद द स्टेट्स. वी आर नॉट टेकिंग मेजर्स की तो हमारी स्टेट का काम ही नहीं है, राइट. तो ये सारी बेसिकली जो थिंकिंग है, वी हैव टू लाइक कम आउट ऑफ इट. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, राइट. देन वी हैव टू बैलेंस पोल्यूशन कंट्रोल एंड इकोनॉमी आल्सो. लॉन्ग टर्म मेजर्स बहुत कंसीडर करने जरूरी है, राइट. कि लोग जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम या फिर हम जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की बात करते हैं, जो फेज 2 और फेज 3 और फेज 4 में हम मेजर्स लेते हैं, राइट. सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट आल्सो. तो पोल्यूशन और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस लेके हमें चलना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज व्हाट दिस न्यूज सेज. ओके, नाउ व्हाट in which news it is coming? So it comes in GS paper 2, polity, governance and environment, and the just GS paper number 3, environment and ecology, and then in essay paper. Okay.
So I hope that you understood that GRAP is like emergency pollution measures, ठीक है, जो सेंटर और स्टेट को मिलके लेने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी शुड लुक टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म और इफेक्टिव वे, ठीक है, जो सेंटर और स्टेट दोनों को मिलके लेना है, एंड स्टेट शुड नॉट डिवाइड देमसेल्फ, राइट, कोऑपरेशन के साथ ही वी कैन कम विद द सॉल्यूशन, ठीक है. देन पोल्यूशन कंट्रोल बॉडीज मस्ट लाइक हैव these institutionally strong to enforce these long term measures also, है ना. And then courts like SC are pushing sustainable governance, not just like quick fixes, जैसे कि हम इन 4 phases के साथ में चलते हैं, ठीक है. So these are the measures that Supreme Court has told to like take. Okay. So with this, we'll end the class, and I'll see you in tomorrow. Okay. Okay. And this is one question that I gave it to you, so you have to like write it down.